Pradesh, to which MEA has condemned and rejected those renaming. How do you see this? China may rename, name, or dename. That's up to it. But that does not change the historical fact. China's claim over Tibet, in fact, is also questionable because it was Tibet which had conquered China. So China must respect historical tradition, which questions very validly and legally and in a historical sense its entire claim over Tibet. But talking of Arunachal Pradesh, in 1962, China had unfortunately conquered a part of Arunachal Pradesh. But after November 62, when the ceasefire was declared and war was over, the Chinese troops were asked to withdraw to their side of the McMahon line. It was an acknowledgement by Mao, the chairman at that time of China, that China's claims do not extend to Arunachal Pradesh. I am also reminded of a visit by Mr. Rajiv Gandhi. In fact, I mentioned it in my book, India's World, which is about foreign policies of some of the prime ministers of India. In 1988, he had gone to what was then called the NEFA. And at a public meeting there, he renamed it Arunachal Pradesh. So when he was asked as to why he did that just before his visit to China, where he was going to meet Deng Xiaoping, he said, if we in India don't know where our borders lie, then how do we expect China to know? So it was not contested at that time by China. Deng Xiaoping received him very warmly. The visit went off very well. So China has to acknowledge the fact that it is changing course according to the season. Whereas in international relations and in diplomacy, there are some boundaries to be respected, and Arunachal Pradesh being part of India is one of those boundaries. So we have seen China has done this before also, renaming the place, and MEA has always condemned and rejected those claims. But doing this again and again and getting it documented, how does it impact, if we talk about larger picture, how does this impact? Well, China may also claim part of the moon belongs to it, but that does not mean that that is a historical fact or a territorial fact. China may also decide to change the name of moon to Deng Xiaoping, but that does not mean that moon has changed its name. So China is being whimsical, but whimsies are fancies, they are not realities. As far as India is concerned, as far as history is concerned, Arunachal Pradesh was, is, and remains a part of India, as MEA has also mentioned. So one final question. If we see the timing of this announcement that China made, when there is disturbance at the western border, and renaming it when in this time, how does this reflect? That's a good question. It shows lack of sensitivity on part of China at a time when there was a crisis on India's western front. That it chose still to persist with its impossible position shows its intent, and it does not seem to be very honorable. So I think we should be on our guard, and in fact it is time that we should ask China to return Aksai Chin that it had occupied in before 1962. So China ने भारत के कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदला, जिसको
जिसको एमईए ने जो है निष्कासित किया, साथ ही साथ किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? साथ ही साथ अगर हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे इतनी ज्यादा हलचल है, चीजें जो है उस तरीके से नहीं है जैसे होती हैं, किस तरीके से आप ये पूरा मामला देखेंगे? चाइना जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ कोई तीर चलाने की कोशिश करता है इंडिया की तरफ, जब लगता है कि हाँ शायद एक आशा की किरण जागी है कि रिलेशंस स्लाइटली बेटर होंगे, पर उसी टाइम पे ये कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे आदमी को सोचना पड़ता है कि वाकई चाइना की इंटेंशन है क्या। पर अगर रियलिटी देखी जाए तो तिब्बत, जो पूरा तिब्बत था, उसने चाइना को कॉन्कर किया था। तो चाइना का क्लेम तिब्बत के ऊपर भी बहुत क्वेश्चनेबल है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो 1962 में जब चाइना ने कुछ पार्ट को जो अरुणाचल प्रदेश के ले लिया था, कॉन्कर किया था, तो युद्ध विराम के बाद जब शांति बहाल हुई तो उसके बाद उसने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि मैकमोहन लाइन से वो वापस चले जाएं चाइनीज टेरिटरी में और अरुणाचल छोड़ दें। तो यही अपने आप में दर्शाता है कि चाइना ने खुद ही एक्नॉलेज किया था कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने अपनी किताब इंडियाज वर्ल्ड में लिखी है कि राजीव गांधी 1988 में अरुणाचल प्रदेश, जिसको उस टाइम पे नेफा कहा जाता था, वहां गए थे और वहां जाके एक सार्वजनिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज से नेफा का नाम, जो एक टेम्परेरी सा नाम था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश होगा। तो जब किसी ने पूछा कि आप तो अभी चाइना जाने वाले हैं, दिल्ली लौट के इमीडिएटली चाइना जाने वाले हैं, तो उस पर क्या असर होगा, तो उन्होंने बहुत उम्दा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमको भारत में ये नहीं पता कि भारत की बाउंड्रीज कहाँ हैं, तो हमको ऐसी क्या उम्मीद करनी चाहिए कि चाइना को पता हो कि भारत की बाउंड्रीज कहाँ हैं। और उसके बाद वो गए चाइना में, बहुत सफल विजिट रही और डेंग सियाओपिंग के साथ काफी घनिष्ठ संबंध भी हुए उनके। तो उसका मतलब ये है कि ना 1962 में ना 1988 में चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, बल्कि एक्नॉलेज किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो अब ये नींद से जाग के उनको लगता है कि किसी न किसी तरह भारत को तंग किया जाए। इसके अलावा इसमें कोई ना उनके पास ठोस प्रूफ है, ना उनके पास कोई ठोस ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है जिससे कहा जाए कि अरुणाचल चीन को बिलोंग करता है। बल्कि ये कह सकते हैं कि चीन को अब ये सोचना चाहिए कि तिब्बत इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ट्रेडिशंस के अनुसार उनका हिस्सा नहीं है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था इससे जुड़ा हुआ कि इस टाइम पे चाइना ने ये क्यों किया, तो चाइना पाकिस्तान से सीख रहा है कि कैसे दूसरे मुल्क को तंग किया जाए। इसके अलावा तो और कोई इसमें लॉजिक लगता नहीं है। और चाइना को चाहिए कि रियलिटी समझे, और रियलिटी ये है कि उसके संबंध अगर इंडिया से बेटर होंगे तो दोनों देशों के हित में है। पाकिस्तान के साथ तो अगर पाकिस्तान डूब रहा है समुन्द्र में तो वो चाइना को भी ले डूबेगा। तो इंडिया के साथ संबंध बनाएंगे तो चाइना की ट्रेड आसमान को छू जाएगी। तो मेरी आशा ये है कि कभी ना कभी चाइना जागेगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा।